Suppose this is an electric dipole. Say this is minus q charge and there is plus q charge. O is the midpoint. This is equatorial line. This is axial line. अब देखो एनी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल. एनी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. से पॉइंट इज P. नाउ distance from minus q charge. Of that point, and that is for plus q charge. At the point P, से इसको हम omit कर देते, निकाल लेते. इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? लीनियर डिस्टेंस मान लो से R2 and from charge plus q the distance is say R1. From the midpoint, the distance is R. Let the angles are theta 1, theta 2. Now potential, electric potential at P due to plus q charge, due to plus q charge, V1 equal to 1 K. K means 1 by 4 pi epsilon naught. K. This charge into this charge, this here. According to definition, you must put a positive unit charge here to calculate the potential. इसको यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखना है अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो फॉर्मूला क्या आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इक्वल टू दिस चार्ज 1 by 4 pi epsilon naught. इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया? 1 by 4 pi epsilon naught. This charge into this charge, q into 1, that means q by distance के R1. Similarly, due to minus q charge, potential at P, say V2 will be K. This charge into this charge, minus q into plus q, that means minus q. लिख सकते हैं plus 1 by R2. ये प्लस q है, ये माइनस q. देखो पोटेंशियल क्या है? वर्क ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो वर्क है, तो वर्क अगर वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस और माइनस साइन लेना पड़ेगा, बिकॉज वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो साइन ले लिया. अब देखो V2 इक्वल टू क्या आएगा? K माइनस K Q बाय
R2. Net potential. Therefore, net potential at P V equal to obviously V1 plus V2 because they are work. Is this they are work, and work is scalar quantity. So add according to scalar rule. Now V will be V1 K Q by R1 plus K Q by R2 K Q कॉमन ले लिया, रहेगा 1 by R1 minus 1 by R2. अब एलसीएम करते हैं K Q R1 R2 minus R1 इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं K Q. अब देखो, draw a perpendicular on that line directly from that point, from the positive charge. This is R2 and that is R1. अगर ये R2 है, ये R1 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये R1 है, तो ये भी इसका डिस्टेंस भी R1 होगा, तो ये भी R1 होगा. ये जो डिस्टेंस है वो R1 होगा. तो बीच में जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगा? ये ऑब्वियसली ये होगा, ये जो डिस्टेंस है ये होगा R2 माइनस R1. R2 माइनस R1, इस टोटल डिस्टेंस है R2, इसमें से ये R1 है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी R1 होगा, तो इसको माइनस कर देना है. तो ये होगा R2 माइनस R1, ये वाला सेक्शन R2 माइनस R1. अब इसका लेंथ है 12, ये L, ये पार्ट L मिड पॉइंट से टोटल हो गया 12. आप टोटल को L लिख सकते हो. इसमें क्या दिक्कत आएगा? फ्रैक्शन आएगा ज़्यादा, इसीलिए सभी लोग इसको 12 पकड़ लेते हैं और 2x. अब देखो, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू K Q R2 minus R1 by R1 R2. अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ये θ1 ये θ2 है. सिंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल. नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल से फॉर एग्जांपल water molecule is an electric dipole, so it is very very small. So since they are very very small, the distance is very very small, also this distance is also very very small, r. Then we can write θ1 equal to θ2, θ1 equal to θ2 equal to say theta, say, and r1 equal to r2 approximately r2 equal to r, say. अब देखो, इस ट्रायंगल में अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री. ये थीटा 20, ये क्या है? हाइपोटेनस.
R2 माइनस R1 बाई 12 हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या हुआ cos थीटा R2 माइनस R1 बाई बटा 2L क्या होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज with respect to angle theta base by hypotenuse क्या हुआ cos theta 2 means theta R2 minus R1 क्या निकल आया 2L cos theta L is the length of the electric dipole। अब इसको पुट करते हैं भाई total net potential V will be K Q R2 minus R1 के बदले क्या लिखेंगे 2L cos theta 2L cos theta नीचे R1 R2 दोनों ही R के बराबर अप्रोक्सीमेटली R होगा, तो क्या होगा R इंटू आर दैट मीन्स R स्क्वायर, दोनों ही R के बराबर होगा, तो R1 भी R R2 भी R, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा R स्क्वायर। ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला एट एनी पॉइंट अराउंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो कंडीशन क्या आएगा। अच्छा इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, V इक्वल टू के रख दो 2QL साइड में लिख 2QL बाई R स्क्वायर cos theta, but 2QL is the electric dipole moment, value of the electric dipole moment. According to definition, if electric dipole moment is P, then P equal to value of either of the charge Q into total length of the dipole 2L 2QL. The 2QL is the electric dipole moment and it is denoted by P, and potential V equal to K P by R square cos theta। यही है मेन फॉर्मूला एट एनी पॉइंट अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कंडीशन में आते हैं, देखो केस वन में क्या है, ये जो एक्सिस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसके ऊपर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या R, अगर ये पॉइंट इधर हुआ एट डिस्टेंस सेम डिस्टेंस में इधर हुआ एट डिस्टेंस R है इधर हुआ, तो एंगल क्या होगा, एंगल घटता जाएगा एक्सिस के ऊपर एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू 0। ऑन द एक्सिस at the same distance R, electric potential, that means electrostatic potential on the axis of a electric dipole V equal to क्या होगा K P by R square cos थीटा क्या होगा यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए थीटा घटते जाएगा, घटते 0 हो जाएगा cos 0 डिग्री, that means V equal to K P by R square because value of cos theta equal to 1। ये हुआ potential, electric potential on any axial point। अब तो केस टू में क्या आएगा, केस 2 में हम ऊपर लिख लेते हैं, केस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था के पी बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो केस 2 में क्या आएगा, या तो एक्सिस हुआ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सेम डिस्टेंस में एट अ डिस्टेंस आर, पोटेंशियल क्या आएगा, तो इस पॉइंट को यहाँ तक लाना है, ऐसे यहाँ तक लाना है इस पॉइंट को, एंगल
बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल क्या होगा, 90। देन V इक्वल टू potential on at any point on equatorial line, V equal to K P by R square cos 90 डिग्री। cos 90 के वैल्यू क्या है, P by R square cos 90 के वैल्यू है 0, देन इट इज 0।